Dear students of class 11th, subject business entrepreneurship, our today's topic is meaning and definitions of entrepreneur. The word entrepreneur has been derived from the French word entreprendre, which means to undertake. In the early 16th century, it was applied to persons engaged to military expeditions. In 17th century, it was extended to the construction and other civil engineering activities. And it was in 18th century that the word was used to refer to economic activities. This was used by Richard Cantillon, a French banker. He applied this word entrepreneur to mean a person who bears uncertainty and risk. According to him, an entrepreneur is the agent who buys factors of production at certain prices in order to combine them into a product with a view to selling it at uncertain price in future. इसके मुताबिक जो एंटरप्रेन्योर होता है एक एजेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय करता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, और इनको एक सर्टन प्राइस पर खरीद कर एक प्रोडक्ट तैयार करता है जिसका कीमत, जिसका सेलिंग प्राइस उसको मालूम नहीं है. दैट इज अनसर्टन एट व्हाट प्राइस ही विल सेल इट. According to J.B. Shaw, a very beautiful definition given by Say, J.B. says, an entrepreneur is the economic agent who unites all the means of production. Land of one, the labor of another, and capital of yet another, and thus produces a product. By selling the product in the market, he pays rent to the land, wage to the labor, interest on capital, and what remains is his profit. इसकी डेफिनेशन के मुताबिक वो तो मुख्तलिफ आदमियों से, किसी से लेबर, किसी से लैंड, किसी से कैपिटल, किसी से मशीनरी, ये इकट्ठे करके वो प्रोडक्ट तैयार करता है और प्रोडक्ट तैयार करके फिर बेचता है. बेचने के बाद इसके पास वो जो लैंड जिसका होता है उसको रेंट अदा करता है, और लेबर जिसका लाता है उसको वेजेस अदा करता है, और कैपिटल जिससे लाता है उसको इंटरेस्ट समेत वापस करता है, और बाकी जो बचता है दैट इज हिज प्रॉफिट. देयरफॉर इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट एन एंटरप्रेन्योर can be defined as a visionary who dreams of innovations through the opportunities in the environment, who converts dreams into reality by assembling the factors of production, and who undertakes the risk. That's all for today.